Good morning to all. Dear students, today we will be learning the back exercise, that means Abhyas of chapter 2, Tagore ki kalam se. So we will be covering the Abhyas of part 2, Tagore ki kalam se. Let us move on. The first part is आइए बातचीत करें. Students, this is the oral part of your back exercise. First part, लेखक का घर कैसा था? लेखक का घर कैसा था? The answer is बहुत बड़ा था. Students, in this oral part, we will be giving the answer in words only. There is no need to write the complete sentence answer. So, लेखक का घर कैसा था? बहुत बड़ा था. Next part, मोहल्ले के लड़के क्या करते थे? The answer is छतों पर पतंग उड़ाते थे. So they used to fly the kites on their terrace. Next, आकाश में उड़ते पक्षी कैसे लगते थे? So how they look? The answer is बहुत अच्छे लगते थे. They look so pretty. This was the oral part of your back exercise. Next question, अब लिखा जाए. It means now this is the written part of your back exercise. First question, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए. It means you have to check on the right option. विकल्प means option. You have to check which is the right option. There will be certain options given to you, but you have to tick on the right option. Let us start. क part. उन दिनों लोगों को अपने घरों में क्या पालने का शौक था? So the question is, उन दिनों लोगों को अपने घरों में क्या पालने का शौक था? The answer is चिड़िया. So उन दिनों लोगों को अपने घरों में चिड़िया पालने का शौक था. Next part, लेखक रविंद्र को क्या भाता था? It means लेखक रविंद्र को क्या अच्छा लगता था? The answer is पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी. It means he was fond of at looking the kites in the sky as well as the birds also when they are flying in the sky. Next, बालक टैगोर कब खुश हुआ? It means when he was happy. The answer is जब पक्षियों को आजाद किया. At that time, बालक टैगोर he was very happy. Third question, किसने कहा, किससे कहा? So it means who said it and to whom. किसने कहा, किससे कहा? It means who said it to whom. Let us see. The sentence is given to you and you have to check that who has spoken this line and to whom it has been said. First part, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं. So who has spoken this line? Tagore. That was Ravindranath Tagore has spoken this line. So you will write Tagore ने. And in the next blank you will write मंजली भाभी से, because Tagore has spoken this line. आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं मंजली भाभी से. टैगोर ने किससे कहा? मंजली भाभी से. That means the middle one भाभी. Second, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो. Now who said this line? मंजली भाभी ने. मंजली भाभी ने किससे कहा? टैगोर से. Next, वाह कितनी सुंदर चिड़ियां हैं. वाह कितनी सुंदर चिड़ियां हैं. So this line has been spoken by again मंजली भाभी. मंजली भाभी ने किससे कहा? परिवार के सदस्यों से. It means the members of their family. So मंजली भाभी ने परिवार के सदस्यों से. सदस्यों means members. I hope it is clear. The fourth question is, शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. Now you have to select the word to complete the sentence. Some words have been given to you. You have to see which one is the suitable for the sentence. The words given are बड़ा, पक्षी, कैद, विस्तृत, बैठे. Let us start. The first part, पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते. So the answer is कैद. पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते. नेक्स्ट, पिंजरे में बैठे पक्षी चिल्ला रहे थे. सो द सूटेबल आंसर इज बैठे. पिंजरे में
बैठे पक्षी चिल्ला रहे थे। नेक्स्ट, हमारा घर बहुत डैश था। द आंसर इज बड़ा, दैट वाज बिग। हमारा घर बहुत बड़ा था। नेक्स्ट पार्ट, मुझे विस्तृत आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। सो द सुटेबल ऑप्शन इज विस्तृत, दैट मीन्स एक्सटेंडेड स्काई, एक्सटेंडेड। आकाश इज स्काई, सो द आंसर बिकम्स विस्तृत। मुझे विस्तृत आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। नेक्स्ट पार्ट, वे कई दिनों से डैश लाने की बात कर रही थी। क्या लाने की बात कर रही थी? पक्षी। वे कई दिनों से पक्षी लाने की बात कर रही थी। I hope it is clear to you that you have to check which is the suitable option for that sentence. Next part is भाषा ज्ञान। First question, दी गई वर्ग पहेली से उल्टे अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। So उल्टे अर्थ वाले शब्द means opposite words. Opposite words. Let us see. First part, आकाश, पाताल. So पाताल is the opposite of आकाश. उचित, अनुचित, उचित, अनुचित. पास, दूर, पास, दूर. कैद, आजाद, कैद, आजाद. अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा. ऊंचा, नीचा, ऊंचा, नीचा. So these were the opposite words. Let us see the second question now. घर, आसमान, स्वतंत्रता, पक्षी, चिड़िया, रविंद्रनाथ टैगोर, खुशी. शब्द किसी का नाम बता रहे हैं। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा होते हैं। आपकी कक्षा में जो वस्तुएं हैं उनके नाम लिखिए। Now the question is, students, as you have done in your previous grade in the English grammar about naming words that are nouns. In Hindi to nouns we say it as संज्ञा. Nouns को क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा. किसी का भी नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा. Now you have to check in your grade which things are there that are संज्ञा. जो वस्तुएं हैं जो कि संज्ञा हैं, you have to write their name which are present in your grade. I hope संज्ञा is clear to you that they tell you any name. It can be a name of a person, place, animal or thing. In Hindi we say it as संज्ञा. So first answer you will write that is दरवाजा. Students, you know very well that we have a door in our grade, that is दरवाजा. Next, खिड़की. खिड़की means window. Next, पंखा, that is fan. Bench, मेज. Students, you know what is मेज? That is a table. कुर्सी. कुर्सी means chair. बस्ता, that is bag. Board, and board means a board on which teacher used to write it. Okay? I hope the संज्ञा is clear to you. संज्ञा is noun only. In Hindi we say it as संज्ञा. नाम बताने वाले शब्द संज्ञा होते हैं. Okay dear students, let us see the third question. रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए. So now there are some words in the sentences which are written in other different color. They are written in red color. You have to change their gender. लिंग बदलकर means that you have to change their gender from male to female and from female to male, and then you have to write the sentence again. That's why they have written वाक्य पुनः लिखिए. It means you have to write the complete sentence again by changing the gender. The first part is मोहल्ले के लड़के वहां पतंग उड़ाते थे. So now you have to change the gender of लड़के. मोहल्ले के लड़कियां. Okay. Again. मोहल्ले की लड़कियां वहां पतंग उड़ाती थी. So लड़के will be changed to लड़कियां. Then उड़ाते will also change according to the sentence. It will become उड़ाती. मोहल्ले की लड़कियां वहां पतंग उड़ाती थी. Next part. भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा. Now what is the opposite of भाभी? That means you have to change the gender. Bhabhi is a female. The male is
भैया, भैया ने मुझे डांटते हुए कहा। नेक्स्ट, भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। नाउ भाभी विल बी चेंज टू भैया। भैया अपने मित्रों के साथ फिल्म देखने गए। भैया अपने मित्रों के साथ फिल्म देखने गए। नेक्स्ट पार्ट, मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक था। नाउ यू हैव टू चेंज द जेंडर फॉर बालक। इट विल चेंज टू बालिका। बालक, बालिका। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष की बालिका थी। So students, please make sure that you write the complete sentence, and wherever the matra will change, that also you have to be careful. I hope it is clear to you. Fourth question now. नीचे दिए गए एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए. So students, you have to segregate the singular and the plural words. Singular means one and plural means more than one. So एक वचन is singular and बहुवचन is, that is plural, more than one. So some words are given to you. You have to segregate them. छतें, लड़का, पतंग, चिड़िया, पिंजरा, बरामदे, फिल्म, सहेलियां. So let us see which are एकवचन शब्द. That is पतंग, पिंजरा, film, लड़का. See, patang means that is one kite. Pinjra, one cage. Film, ladka, that is one boy. So ekvachan is which tells you about only one thing. Bahuvachan words are, bahuvachan shabd kaun se hain? Chhatein, they are plural. Baramde, it means so many baramde. Chidiyan, saheliyan, so these are bahuvachan shabd. I hope this is also clear to you. So the very last question of the back exercise is, पाठ में से 3 संज्ञा और 3 विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए. So the question arises, students, what is संज्ञा and what is विशेषण? So संज्ञा, as I already told you, that is noun, that is naming word. संज्ञा, कोई भी नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं. Now what is विशेषण? विशेषण is adjective, that is the describing word which describe us more about the nouns. They will tell you about the quality or the quantity of the noun. So you have to find some of the sangya shabd and the visheshan shabd from your chapter. You can write on your own also, or if you want to write this one, you can write these also. So sangya shabd are ghar, patange, pinjre. I repeat, ghar, ghar is a name of a place, patange, pinjre. These two are name of things. So these are sangya shabd. विशेषण शब्द बड़ा, रंग बिरंगी, कई कई. बड़ा, रंग बिरंगी, कई कई. So students, I hope the complete back exercise of part 2, that is chapter 2, is clear to all. Thank you. Have a great day. Take care of yourself and take care of your family members. Bye bye.